Please. So thank you for coming once again. And our endeavor here is to have these small group meetings so that, interaction is easier, cozier, and we get to know each other. So you met, I think, the team today. So अभी आपके पास फोन के सामने एक चेहरा भी है, तो जब भी आप बात कर रहे हैं तो so that was the whole idea with which we have launched this open house kind of meetings, and I hope we'll have many of them. Plan is to have one every month, of course, but अभी कितना होता है, कैसा कैसा होता है, वो भी देखेंगे. But इंटरेक्शन होने से फेमिलियरिटी बढ़ती है, फेमिलियरिटी आने से थोड़ा कंफर्ट बढ़ता है और ट्रस्ट बढ़ता है या ब्रेक हो जाता है, दोनों में. आइदर थिंग इज पॉसिबल, बट अल्टीमेटली both of us are trying to forge some relationship from a business angle and from a personal angle. That is the idea. तो किसी भी रिलेशनशिप बनने के लिए तो मुलाकात होना चाहिए, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज होना चाहिए. तो दैट इज द ऑब्जेक्टिव विथ विच वी हैव लॉन्च दिस. तो भगवान करे तो और भी मीटिंग्स होंगे ऐसे, एंड we'll have more occasions to meet like this. So कोई ऐसा फिक्स्ड एजेंडा तो है नहीं, वो भी बता दिया. आइडिया वॉज टू हैव आपके कोई व्यूज हो जो आप शेयर कर सकते हैं, विच विल हेल्प अस टू डू आवर जॉब्स बेटर. सो आई वॉज गिवन टू अंडरस्टैंड कि most of you are trading, right? Most of you are traders, and most of you are day traders or very short-term traders, and some of you are from the training part of our business, some of you are from the NeoTrader part of the business. So I just wanted to share some thoughts about trading. तो एक्टिव ट्रेडर कौन है? पूरे दिन ट्रेड करता है ऐसा? ओके, फुल डे ट्रेडर बाकी कोई नहीं? एवरीबॉडी हाथ ऊपर करो, क्लोज ग्रुप ही है, कोई रिकॉर्डिंग कहीं नहीं जा रहा है. सो एंड मोस्ट ऑफ यू हैव अदर बिजनेसेस और एम्प्लॉयमेंट है और ट्रेडिंग कर रहे हैं, जॉब है और ट्रेडिंग कर रहे हैं. ऐसा है कि फुल टाइम ट्रेडर हो? फुल टाइम, करेक्ट, वर्किंग एंड ट्रेडिंग. तो विल बी अ मिक्स. किसी का बिजनेस है, कोई काम कर रहा है, कोई ट्रेडिंग कर रहा है. सो कोई भी काम अपन सक्सेसफुली करना है, सो वी नीड टू हैव द राइट काइंड ऑफ एटीट्यूड टुवर्ड्स इट. दैट्स अ मेन थिंग. Now, why am I saying this? Because I've been trading and interacting with people now for 40-45 years. So, generally some insight into how people think is there. Most people, including many of you, I'm sure, think of yourself as investors also. इन्वेस्टमेंट भी करते होंगे आप लोग सब. सबसे पहला इन्वेस्टमेंट किया होगा, फिर बाद में ट्रेडिंग शुरू किया होगा. तो द थिंग इज, योर फर्स्ट एटीट्यूड इज टू बी एन इन्वेस्टर. In fact, nowadays people are doing trading. वो तो अभी हो गया 2020 के बाद. 2020 के बाद दैट हैज बिकम अ कंपल्शन, राइट? बट देन if you take the last 20 years, for example, then everybody came from being an investor into being a trader. The sad truth is,
Investors are not professional. They are not professional. What is a professional, or who is a professional? A professional is somebody who has the right attitude towards his business. अभी कोई डॉक्टर है तो वो प्रोफेशनल है, तो उसका सारा फोकस वो डॉक्टरी में देता है. वकील है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, या किसी भी तरह के प्रोफेशनल, they put their full focus on that. And there is an attitude that this is my profession. अब कितने इन्वेस्टर टर्न ट्रेडर्स रियली थिंक कि ट्रेडिंग इज माई प्रोफेशन? I would say very, very few. Why is it that they don't think it is a profession? Because for many, many people, they don't think it is a legitimate business. There is this feeling that trading is not a legitimate business. ये तो तुक्का है, ये गैम्बलिंग है, तो ये लेजिटिमेट बिजनेस नहीं. जब लेजिटिमेट बिजनेस नहीं है करके एक सोच आ जाता है, दैट थॉट कम्स इनटू योर माइंड, you cannot turn professional about it. So that is why I started with attitude. If the few of you who said that I am trading full time, then you are working your way to be a professional trader. If you don't have the right attitude, success नहीं आएगा. Hits and misses होते ही रहेंगे. डॉक्टर का बिजनेस में हिट्स एंड मिसेस होता है क्या? वकील का बिजनेस में होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट का बिजनेस में होता है, किसी भी प्रोफेशनल का बिजनेस में हिट एंड मिस होते रहता है. वो ऐसा स्मूथ कर्व है. तो ट्रेडिंग में क्यों नहीं होना चाहिए स्मूथ कर्व? वो इसीलिए है कि किसी का एटीट्यूड ही ठीक नहीं. कोई सोचता ही नहीं है कि ये लेजिटिमेट बिजनेस है, कोई ये सोचता नहीं कि ये प्रॉफिटेबल बिजनेस है. Everybody thinks this is a business of luck. If you think this is a legitimate business, if you think this is a profitable business, then you will think there is money to be made here, month after month, quarter after quarter, year after year. So that is what you think when you become a professional or make your children into professionals. Why you are not thinking like that? If you are holding down a job, your job is your profession. 1 तारीख को पगार आया नहीं अकाउंट में, 2 तारीख तक देखा, 3 तारीख को तो आप अपने बॉस के पास जाते ही हो ना. बोले सैलरी क्रेडिट नहीं हुआ, क्यों? आप तो उसको हक समझते हो ना कि मेरा हक है, 1 तारीख 2 तारीख 3 तारीख को सैलरी आना चाहिए. There you are thinking that money should come month after month, quarter after quarter, year after year. और मुझे इंक्रीमेंट भी मिलना चाहिए, बोनस भी मिलना चाहिए, ये सब मेरे हक हो गए. तो ट्रेडिंग एज अ प्रोफेशन में आपने आपका हक को किधर स्टेट किया, क्लेम किया, वो तो अलग बात है. वेयर डिड यू स्टेट इट ऑल्सो कि मेरे को महीना टू महीना पैसा मिलना चाहिए, क्वार्टर टू क्वार्टर रुपया आना चाहिए, एवरी ईयर आई मस्ट बी प्रॉफिटेबल. ये आपने कब किया? अगर आप ये करेंगे ही नहीं तो बनेगा कैसा? What will manifest in your life is only what you think. And what you think should become a reality for you. If that doesn't happen, this is a hobby. Then hobby is to be done when you have the time. That's all. And hobby is to kill the time. I read books, I watch movies, I listen to music, I travel, I meet with friends. ये सब हॉबी है. जब समय है तो ये मैं करूँ, तो जब समय है मैं ट्रेड भी कर लूँगा. मैंने क्या कहा शुरू में? इन्वेस्टमेंट इज नॉट प्रोफेशनल. क्यों? जो इन्वेस्टर है वो कभी सोचता है नहीं कि महीना टू महीना पैसा आना चाहिए. वो ये भी नहीं सोचता है कि क्वार्टर टू क्वार्टर मेरा पैसा आना चाहिए. वो तो बोलता है इन्वेस्ट कर लिया, सारा पूंजी लेके एक में डाल दिया, वो पॉट लेके गैस पे चढ़ा दिया, बोले उबलते रहो, और साल के बाद 2 साल के बाद 3 साल के बाद
आएगा तो आएगा। अब 10 चीज में इन्वेस्ट किया, 1 पैसा दे देता है, खुश हो गए। A professional trader should be looking to make money in the shorter term, because that is where the money is. ये कहानी तो स्प्रेड कर दिया किसको? जिसके पास टाइम नहीं है। टाइम सबके पास उतना ही है, सबके पास 24 घंटा ही। It is what we do with the time that makes all the difference. It is the focus that we give to the time that is available to us that makes the difference. So if you give more time to something else, you are giving it more focus, you are giving it more attention. And you want this, but you are not devoting time to it, it will not manifest, it will not happen. Simple. So a professional trader must understand that he is always playing in the short term. उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10% भरने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। 15% प्रॉफिट टैक्स खुशी से भरो। अरे प्रॉफिट बनेगा तब तो टैक्स आएगा ना। हाउ मेनी पीपल हैव यू हर्ड कि मैं अभी नहीं बेच रहा हूं क्योंकि मुझे उसमें टैक्स लग जाएगा। बस प्रॉफिट बन गया तो कुछ तो बचेगा ना टैक्स देने के बाद भी। यू आर स्टिल बेटर ऑफ नो। 100 रुपया बने, 15 रुपया दे दिया तो 85 तो बच ही गया ना। वो 15 बचाने के लिए 30 उड़ा देंगे। All kinds of wrong attitudes. So that is the first point I wanted to make. If you are going to be serious about trading, get the right attitude. Understand that you have to become professional in this line of business, just like you will be professional in your employment or in your business or in whatever qualification that you have gained for yourself. That is the key. The second thing about being professional is trading is all about spotting an opportunity. And market का reality है कि there is endless opportunity. Endless. रुकता ही नहीं है। ये एडवांटेज जो है, दिस इज नॉट अवेलेबल टू एनीबडी एल्स। कोई स्कूल टीचर को ये अवेलेबल नहीं है, कोई किसी को भी ये अवेलेबल नहीं। ये सिर्फ अवेलेबल है टू द प्रोफेशनल ट्रेडर। स्पॉटिंग एन अपॉर्चुनिटी, you can spot an opportunity only when there are opportunities, right? And market is endless opportunity every single day. After you have spotted an opportunity, there must be an ability to take advantage of that opportunity, to work that opportunity. And this is where the professional traders have to employ strategy. स्ट्रैटेजी नहीं होगा तो अपॉर्चुनिटी को सीज नहीं कर पाएंगे। एंड दिस इज वेयर ऑल द डिफरेंस कम्स। बीइंग एबल टू स्पॉट एन अपॉर्चुनिटी, बीइंग एबल टू टेक एडवांटेज ऑफ इट, creating a strategy to harness it. These are the three things. And here is where different aspects related to trading comes. कोई ट्रेनिंग लेता है कि ये अपॉर्चुनिटी को कैसे स्पॉट किया जाए और उसको कैसे एक्शन किया जाए। सो उसमें टेक्निकल एनालिसिस ट्रेनिंग इज अ मस्ट। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यूट्यूब वैरायटी। YouTube and Google have got absolutely all the information you want, all. But it is not available laid out in order. तो आज आप पढ़ रहे हैं 7th स्टैंडर्ड वाली चीज़, कल आप सुन रहे हैं सीधा ग्रेजुएट लेवल, परसों आप चले गए 2nd स्टैंडर्ड, उसके अगला दिन आप PhD लेवल। इट्स ऑल कंप्लीटली हैफेजर्डली लेड आउट। सो आपका स्ट्रक्चर्ड लर्निंग कैसा हो सकता है? नॉट पॉसिबल। एंड फॉर लर्निंग टू बी सीटेड, इट हैज टू बी स्ट्रक्चर्ड। दैट इज व्हाई वी सेंड आवर चिल्ड्रन टू स्कूल। फर्स्ट स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड तक सब्जेक्ट्स तो वही है, नो चेंज। सेम मैथ, सेम social studies, history, whatever, same thing we learn, but more and more and more and more in detail.
PhD लेवल अप्लाइड मैथ्स कर रही है तो वही मैथ्स है जो सेकेंड स्टैंडर्ड से चालू की, बट उसके डिटेलिंग, बट इट इज ऑल स्ट्रक्चर्ड. Structured learning only will help you. So that is why learning is a must. अभी मार्केट्स थ्रू द इयर्स बदलते जा रहे हैं, और किस टाइप का बदलाव है? स्पीड. एंड स्पीड इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ व्हाट? टेक्नोलॉजी. 94 तक तो कुछ नहीं था, एकदम ओल्ड स्टाइल था ट्रेडिंग रिंग. 94 से आ गया ऑनलाइन, फिर आ गया ईमेल, फिर आ गया इंटरनेट, फिर आ गया मोबाइल पे ट्रेडिंग. इट जस्ट became more and more and more and more. What has this done? It has increased the speed at which all changes are happening. तो ये स्पीड हार्नेस करने के लिए आपको भी टेक्नोलॉजी का हेल्प तो लेना ही पड़ेगा. So that is why we devised this NeoTrader. So I started making NeoTrader in 2015 when I realized that market is completely undergoing a change and everything is going to become online. तभी 2020 में कोविड हो जाएगा करके किसको पता था. But there was a recognition that market is going more and more towards technology and that everything would speed up. And therefore everybody needs to be enabled to act faster. A professional is one who knows better, who understands faster and acts speedily. And he is also one who gets out of the way when things are not working out. So as a professional, while your goal is to make profits, that's your number 2 goal. Your number 1 goal is to avoid losses. You cannot avoid them because profit and loss is part of this game. So you can try to minimize them. So the strategy I talked about is all about minimizing risk control. Professional trading is all about controlling risk. And that is where the focus should be. So you got to learn more from your mistakes rather than from your victories. सब लोग प्रॉफिट हो गया तो खुश हो गए, लॉस हो गया तो मुंह मोड़ लिया. Actually, you should look at your loss-making trades and see why they happen. There's lessons in there because you are the one who created the loss. You're also the one who created the profit. So if you look at only half of what you did and not the other half, you're not going to get the answer. So professional trader is one who has lots of losses. If you have lots of losses, there is nothing to get afraid. ये part and parcel है इस game का. The real deal is, how much are you losing when you lose? And how much are you winning when you win? Obviously, that has to be a different measure. आपके 35% hit rate हो सकते हैं. But if you make 50,000 on the gains and on the 65% losses, you're losing only 7,000. You'll still end up to be a very, very comfortable profit-making trader. So the whole game is not in hit ratio. अगर आप रीडिंग का शौक रखते हो तो इस पे मैंने एक ब्लॉग लिखा है जस्ट रिसेंटली, हमारा वेबसाइट पे जाके पढ़ लीजिए. आई हैव सेड हिट रेशियो इज नॉट अ मेजर फॉर अ ट्रेडर टू जज हिमसेल्फ. ट्रेडर का मेजर क्या है जजमेंट के लिए? What do you think is a measure for a trader to judge himself? बराबर है. That is the only thing you judge by. So a company can also do that, right? Why are people talking about return on equity, return on capital employed, quick ratio, current ratio, debt to equity, what is the profit cover, interest cover, कितने ratios है? ये सब क्यों है? जरूरत नहीं है ना, सब लोग net profit से करूँ. What about tax? What about depreciation? वो सब क्या करेगा net profit? So many things, right? If somebody just equates himself on net profit, then trading becomes a life and death game. Means profit बना तो मैं कुछ
काम का आदमी है, नहीं बना तो मैं तो निकम्मा है, आई एम यूजलेस, गुड फॉर नथिंग। अनफॉर्चुनेटली एवरीबडी इज डूइंग दैट वन। सब लोग आपको नेट प्रॉफिट से ही तोलते। किसी ने देखा आपने कितना मेहनत किया? जो एक्टिव ट्रेडर है वो कितना घंटा स्पेंड करता है एक दिन में? हाउ मेनी आवर्स? 10-15 घंटे 10-15 घंटा तो बहुत हो गया। फिर तो ब्रशिंग से लेके सोने तक बोल दिया आपने। बट मिनिमम राइट 9 to 3:30 तो फिक्स है, 8:30 से 3:30 रख लो आप, तो 7 घंटा तो ऐसे ही हो गए। उसके बाद थोड़ी बंद कर देंगे, फिर रात को कुछ टीवी देखेंगे, करेंगे वो कर, तो 8-9 आवर्स तो है ही है। तो एफर्ट नहीं है, टाइम नहीं दिया आपने। ऑफिस में कोई लेटर से एक सर्जन है, वो दिन में एक सर्जरी कर सकता है। आजकल तो 1.5-2 लाख से कम तो कोई लेता ही नहीं है सर्जरी का। दिन में एक सर्जरी करते रहे तो सर्जन तो बहुत पैसा बनाएगा, महीने का 25-30 लाख तो बन ही गए उसके, एक सर्जरी। बहुत सारे सर्जन ऐसे दिन में 8-8 सर्जरी करते रहते हैं, जो डिमांड में है, बहुत स्किल्ड है। दे आर ऑल्सो मेकिंग लॉट ऑफ एफर्ट। जो 7-7, 8-8 सर्जरी करता है वो बोलता है आपको कि नहीं मेरा 8 सर्जरी होता है तो मैं 20,000 ही लूंगा। ऐसा मिला सर्जन को आज तक? आपको नहीं मिलेगी। उल्टा वो 3 लाख रुपया लेगा। वाई? इज चार्जिंग यू फॉर टाइम स्पेंट। हरीश सालवे खड़ा होने के लिए 5 लाख रुपया लेता है। ओनली टू गेट अप फ्रॉम दैट चेयर ही विल चार्ज यू 5 lakhs. And then to stand and breathe next to you will charge another 5 lakhs. फिर बोलने लगा तो फिर दूसरा मिला। दिस इज द रियलिटी फॉर बिग लॉयर। सुप्रीम कोर्ट में गया, आप फर्ज कर नहीं जाए, ऐसा आए नहीं नोबत। What is it for? For time spent. And then additional money for effort made. तो ट्रेडर लोग के लिए दो नया मेरिटेड मैंने कॉइन किया है, ROE, विच इज नॉट रिटर्न ऑन इक्विटी, इज रिटर्न ऑन एफर्ट। अब चार्ट देखते हो? चार्ट तो देखते हो है ना? कितना घंटा देखते हो? कितने चार्ट देखते हो दिन में? 5 देखोगे, 10 देखोगे, 100 देखोगे, जो भी है। आप रीडिंग करते हो, टीवी में जो बोल रहा है वो समझने का कोशिश करोगे, फिर उसको जाके गूगल भी करोगे। ये सब एफर्ट है ना? इस एफर्ट का पैसा किधर मिल रहा? टाइम स्पेंड 7-8 घंटा तो अपन ने डिस्कस कर लिए, इसका पैसा कौन देगा? आपको मार्केट से निकालना है, कोई देने के लिए इधर खड़ा नहीं है। नेट प्रॉफिट इज नॉट द मेजर। लुक एट योर रिटर्न ऑन एफर्ट. Look at the time return on time spent. Now, how will you equate this? What is the easiest way to equate this? What are you qualified as? You're a civil engineer. What will a civil engineer get today? Let's say you're a fresh graduate civil engineer. नौकरी ले लिया आपने, कितना पगार मिलेगा? 30,000 रुपीज, ठीक है? 30,000 रुपया आपको मिलेगा। ऑफिस में बैठे हैं तो 6-7 घंटा तो बैठना ही है, साइट पे चले जाए तो 8-10 घंटा हो गया, बराबर है। सो 8 to 10 आवर्स तो आप गिन लो फॉर योर क्वालिफिकेशन एंड फॉर दिस अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंट एंड वॉट एवर एफर्ट यू विल गिव ड्यूरिंग दैट डे, यू विल गेट 30,000 रुपीज। नो मैटर वॉट हैपन, 30,000 रुपया 1 तारीख को आ जाएगा। सो नो रिस्क। ट्रेडर 8-10 घंटा है, वो भी क्वालिफाइड है, उसको भी 25-30 हज़ार रुपया मिलेगा, ग्रेजुएट हो गया, कुछ CA है, कोई है। लेट अस टेक 30,000 रुपीज एज द एवरेज। इसमें लेकिन रिस्क है। रिस्क किस चीज़ का है? घाटा भी हो सकता है और दुगना प्रॉफिट भी हो सकता है, दोनों के लिए तैयार रहना है। सो 30,000 का 30,000 इक्वेट कर सकते हैं क्या? नहीं, उसमें एक मल्टीपल डालना पड़ेगा। सो लेट अस से वी पुट अ 2x मल्टीपल. So if as a civil engineer getting employed, you are earning
30,000 rupees and as a civil engineer who decides to go into the market, unless he gets 60,000 rupees, you two are not on the same track. So you think कि मुझे कितना रुपया मिलेगा, कल को आपको ट्रेडिंग बंद करके आपको नौकरी में जाना है तो कितना रुपए का सैलरी मिलेगा आपको. जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाए तो नौकरी भी नहीं मिलता. दैट इज अनदर फैक्ट. यू मस्ट गेट मेनी टाइम्स ऑफ दैट. अगर आपको लगता है कि 10,000 रुपया ही मिलेगा मुझे और मैं ट्रेडिंग करता हूं तो मुझे 25-30 हजार रुपया नहीं मिले तो इट इज नॉट वर्थ. मैं जाके वो 10,000 का ही नौकरी करूं. इसका जानकारी होना चाहिए. सो द प्रोफेशनल एटीट्यूड आई एम सेइंग हैज टू कम एवरीवेयर इन असेसिंग व्हाट आई वांट. व्हाट आई वांट का कोई सीमा ही नहीं है. बट व्हाट कैन आई रियलिस्टिकली एक्सपेक्ट, एंड देन where can I bring my skill to deserve myself more? And that skill will come from learning, spotting the opportunity, seizing that opportunity, using the tools that are currently available in the market. If you do that, then you have an edge over somebody else. Please understand that this is not difficult. Why is it not difficult? Because everybody in the market is a fundamental analyst. And therefore, nobody is a professional. Nobody knows how to spot an opportunity. Nobody knows how to seize an opportunity. Nobody knows how to work at something to take advantage of that opportunity. And nobody has the faintest idea of how much money I should be making in line with who I am today. A doctor knows that if he has spent 8 years, 9 years, 10 years readying himself, he cannot open up one dispensary in Dharavi and expect a payback. उधर भी धंधा तो चलेगा लेकिन पेबैक नहीं होने वाला. सूटेबली उसको काम करना है ना. वो आप लोग क्यों नहीं करते? क्योंकि आप लोग इसके बारे में सोचते ही. मार्केट में आए हो, थोड़ा बहुत लर्निंग कर ली, कुछ लोगों ने थोड़े बहुत टूल सेट ले लिए, उस पर लगे हुए हो. डू इट द राइट वे. गेट द करेक्ट एटीट्यूड. अंडरस्टैंड दैट यू आर इन अ बिजनेस, a legitimate business, a profitable business, a business which can give you much more money than any other business, whether it is good times or bad. Because the professional trader can short and make money which opportunity is not available to an investor or anybody else. Once you recognize that, and then you don't make the effort, you don't spot the opportunity, you don't do anything to work it, it's criminal. You're just wasting time. Everything is available today. All information is available, Google and YouTube, provided you know what to look for exactly. How will you know? Unless you have defined, you will not know. So if you have to define, you must know. And if you have to know, you got to educate yourself. All of you are past the age of formal learning. सबको लगता है 20-22 साल में वो खत्म हो गया, phase of my life. Nowhere does it say कि at the age of 60 you cannot start learning. It's the attitude which makes all the difference. Be professional. And then things will start to happen. Think short term. ये जो डमी बेचा गया है, I'm not saying anything against long-term investing. Please understand. I'm just making a differentiation that long-term investing is not professional. You cannot make a life out of it. जब भी आपके पास 10-20 करोड़ रुपया जम गया हो ना, फिर आप बोलो कि मैं प्रोफेशनल इन्वेस्टर हूँ. क्यों? कल का रुपये का सोचना नहीं है, इस मंथ का आवक का सोचना नहीं है, 20
20 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट हो गया है बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, उसमें से आपको 15-20 लाख रुपया डिविडेंड आता है जो आपका घर का खर्चा चला देता है, पीरियडिकली आते रहता है. Everybody just fools himself that he is a professional investor. But the only truly professional investor, if he can call himself that, is somebody who is already sitting with a 20 crore portfolio with good dividend yielding stocks. That is the only fellow who can do it. अगर आप किसी में से वो कैटेगरी में है तो you can relax. But if you are not in that category, then don't buy into that story. वो म्यूचुअल फंड स्कीम्स बेचने के लिए है, वो इंश्योरेंस का कंपनीज को चलाने के लिए, वो ब्रोकरेजेस को चलाने के लिए. प्रोफेशनल ट्रेडिंग इज अ डिफरेंट बॉल गेम. I have become a professional trader long ago. I came into the market in 1977. It took me 20 years to become a professional trader. Same hit and miss, hit and miss, hit and miss. It was going 20 years I spent not making money. बनाया खोया, बनाया खोया, बनाया खोया. After somewhere in the very late 90s till today, it's been a good ride. Because I changed into becoming a professional. It is not that I did not hold on a job because I needed the money. But as soon as that situation changed, I quit it. And I turned a full-time professional. Today I run all this business, but I don't look into it at all on a day-to-day basis. There are people to look into. 9 o'clock till 3:30 I only trade. That's all I do. I manage other people's money. I manage my own money. I trade full day. I analyze. I trade. I trade lots. I swing trade. I short-term trade. जैसा मैंने पहला बोला 15% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन स्टैक भरने में मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं. वो बन गया तो बन गया, ठीक है, वो मेरा गोल नहीं. माई गोल इज 40%, 80%, 100%. इट इज देयर एंड देयर आर टाइम्स लाइक दीज. ये मार्च से जो अभी चला जून तक, what a move it has been. Smooth. Absolutely smooth. Why people could not participate? Reaction आएगा, reaction आएगा, reaction आएगा, reaction आएगा. आया ही नहीं. जो प्रोफेशनल ट्रेडर है उसने क्या किया? हर रोज सुबह 9:15 बजे बैंक निफ्टी का पुट बेचा. एवरीडे मॉर्निंग. मार्च से लेके जून तक 90 कैलेंडर डेज हो गए, समझो उसमें 60 ट्रेडिंग डेज भी हो गए. अब 60 में से 5 दिन पैसा दिया, 55 दिन तो पैसा लेके गया. स्मूथ राइट, लॉट्स ऑफ मनी. 100 बैंक निफ्टी बेच देते तो भी रुपया था, 1000 बैंक निफ्टी बेचे तो भी रुपया था, 10,000 बेचे तो उतना रुपया था. मुंह तीनों के लिए एक ही था. प्लीज अंडरस्टैंड, it's only the scale. And that is where minding your losses and doing capital management and all is required. But effort वही था और टाइम वही था, लेकिन कमाई अलग था. आपने 100 बेचा, इन्होंने 1000 बेचा, उन्होंने 10,000 बेचा. Same बैंक निफ्टी का मूव 200 points and went up, your put became 50% lower. Investing किया, small cap, new high, mid cap, new high. Your nifty is not in new high. 18,600 है ना अभी. साल भर पहला भी 18,600 था. इन्फी का क्या हाल है? 25% डाउन. टीसीएस का क्या हाल है? 25% डाउन. एचडीएफसी बैंक का क्या हाल है? 20% डाउन. अडानी ग्रुप का क्या हाल है? कोलैप्स हो गई. गिन लो, जो भी ब्लू चिप है वो गिन लो आप. 18,600 to 18,600. Your blue chip portfolio is down by 30%. कर लो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग. ये घुट्टी पिलाया है, जिसको पीना है उसको पीने दो. आप अगर ट्रेडिंग के मैदान पे उतर आए हो और उसको लाइफ का
प्रोफेशन बनाना चाहते हो तो गेट द राइट माइंडसेट, उसका पैसा अलग रखो। बोले ये HDFC बैंक जहाँ भी जाए जाए, मेरा तो उसमें कुछ पैसा पड़ेगा, बट डोंट एक्सपेक्ट टू अर्न एनीथिंग फ्रॉम इट। वो 10 साल के बाद देखना, मिले तो मिली। स्टोरीज किस चीज के आते हैं? 1918 में विप्रो जिसने लिया उसके पास इतने करोड़ हो गए, 1990 में ये लिया तो इतने करोड़ हो गए। भाई साहब 2020 का भी बता दो मेरे को, जो मेरे को 2030 में 50 करोड़ दे देगा। है जवाब किसके पास? नहीं है ना। रियर व्यू मिरर में तो अपन सब एक्सपर्ट है गाड़ी चलाने में। है जवाब किसके पास? नहीं है ना। रियर व्यू मिरर में तो अपन सब एक्सपर्ट है गाड़ी चलाने में। तो ये सब स्टोरीज। बोले नहीं नहीं, ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, अपने को इन्वेस्टिंग नहीं करना चाहिए। देखो 1000 रुपया डाला और 10 करोड़ रुपया हो गया, कुछ करना ही नहीं था लाइफ में। These are nonsensical stories. I'm not saying they are not true. But is it the life that you have chosen? Please look at that. There is so much money in trading that you can't even believe. It is there for you to take it, provided you get the right attitude towards what you're doing. You are not to become prisoner of images. You are not to become prisoners of what you see on television or read on internet, etc. You are not to gather the wrong set of belief systems. Believe in what you are doing, get the right attitude, know that it is a profitable business, know you can make money in good times and bad, and know that money can be made consistent. One thing above all, keep the losses small. That's it. Profits will take care of themselves. Simple way to look at it, there are four things only. Small profit, small losses. Big profit, big losses. These are the 4 possibilities. Let the small profit and small loss take care of itself. Don't make the big loss. तो बचा क्या? ये simple plan है. Small profit, small loss, how will they take care of each other? Only if you have a proper strategy. Big profit कभी बनेगा when you see a big opportunity and you take it and you run that position. Run मतलब not for years. 1 महीना चलाओ, 2 महीना चलाओ. लूपिन तो मर गया था ना एक टाइम का ब्लू चिप, लेकिन 725 वाला अभी 825 तो बिक गया. 100 रुपया पर कॉन्ट्रैक्ट तो बढ़ा, एंड कॉन्ट्रैक्ट इज सम 700 or 1000 शेयर्स और वॉट एवर. ऑन अ सिंगल कॉन्ट्रैक्ट आपके 50-70 हजार रुपया बन जाते. All of you have got certain capital going on in the market. 5 लॉट लूपिन लिए, आपका कुल मिला के 6-7-8 लाख रुपए का मार्जिन आता. 5 लॉट लूपिन में 3.5 लाख बन जाता. 7 लाख मार्जिन लगाए तो क्या रिटर्न आ गया? लुक एट थिंग्स दैट वे कि 50% रिटर्न आएगा. या आर्बिट्रेज फंड में वो लोग पैसा लगाते हैं, वो इन्वेस्को फंड 7% पर ईयर निकालता है, बोलता है मैं सबसे बेस्ट है 7% एनम. अब आर्बिट्रेज फंड को भी टैक्स डिडक्शन होता ही है. दैट इज नॉट एग्जेम्प्ट एंड दैट इज द लीस्ट रिस्क. और वो 7% पर एनम निकालता है और लोग इधर जाके पैसा डालते हैं उसके अंदर. जिसको डालना है डाले, अपने को कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है. जब हम उसमें नहीं डालते हैं तो अपने को 50% कमाना ही है. सोच का फर्क. दैट इज द ओनली मैसेज आई वांट टू लीव यू विद टुडे. NeoTrader एक टूल है which will allow you to spot the opportunity, which will allow you to harness the opportunity, which will allow you to set your parameters for profit taking and risk control. It cannot change your attitude.
It's only a tool. But it's a necessary tool. NeoTrader is a result of 1,000 charts. 1,000 चार्ट एक पेज में कैप्चर हो गया. तो 1,000 चार्ट पे आप एफर्ट मत लगाइए, टाइम मत स्पेंड करिए. Remember this new paradigm for measuring yourself. ROE, return on effort. ROTS, return on time spent. इसको अपना मकसद बनाइए and see how you fare. If you're not going up in this, कि I got 1,000 rupees for every 1 hour I spent, it should go to 2,000. I got 1,000 rupees for the time spent every 1 hour spent. Your goal is to make it to 2,000. Spend it that way. Right? So I thank you all for a patient listening, and I hope to see you. Right? Please be attached to my team. Any difficulty you have, they are here to solve it. Right? I keep overseeing their work. It is not that ये मेरा abandoned baby नहीं है. I'm very much here every day. But they are the people who do the work. मैं थोड़ा मार्गदर्शन कराता हूँ. अडवाणी जी जैसा हो गई. Yeah. No, just I have one question. Please. See, in case like we have the working profession, so of course you at the moment we don't have that. Is the person ID because towards our. So how about how should we do, or should we continue with this, or should we Right. What is the attitude all about? First is acceptance. कोई भी प्रॉब्लम है लाइफ में, जब तक वो प्रॉब्लम है करके आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो उसका सॉल्यूशन नहीं आएगा. दिस इज ट्रू फॉर एनी वॉक ऑफ लाइफ. So first is acceptance. कि I am not professional. I need to be professional. So first I have got to have the right understanding of this business. This is not a bad business, which everybody tells you that, what are you doing? ये अच्छा नहीं है, आप अपना नौकरी करो ना. This is what everybody will tell you. पहला कान बंद करने का उससे. Then you accept that this is a legitimate business and this is a profitable business. So then you start looking for where I can profit. Then you got to think of yourself, what does my time allow me to do? Can I find more time? What is the kind of effort that I need to do? Meaning, where do I focus during the time which is available? Time तो सबके पास है. It is the focus which is lacking. And focus means concentration. Right? Concentration will go in bursts until it becomes a kind of a way of life. Then only it will sustain. So you need to bring the focus on the time that you are having. WhatsApp padega. WhatsApp pe focus. You will become great at typing with 2 thumbs. Is that your goal? Typing with 2 thumbs? वो एक टीनेजर को करने दो, अपने को नहीं. So attitude धीरे धीरे बदलो, bring the focus, see where your time is going and see what is the time required. What do you want to do? Spot an opportunity. What is there in my environment where I can spot an opportunity? I did some training. Okay, let me make use of that training. I bought NeoTrader. Okay, let me make use of NeoTrader. Does training allow me to spot an opportunity? Yes, it will. Does NeoTrader allow you? Yes, it will. Now you have come till that. Then you say, how am I going to convert this opportunity into some profit? Start small. But even if you do 100 share, the return can still be 50%. 5 लॉट लूपिन लिया तो 7 लाख रुपया लगा ना. अब 50 शेयर लूपिन ले लो तो 3,500 रुपया लगेंगे आपके, 35,000 रुपया लगेंगे. So bring it step by step, but you got to bring focus on what you're doing. Time नहीं है is the biggest cop out. टाइम नहीं है, सब लोग बोलते हैं, रियली वो लोग बोल रहे हैं कि मेरा फोकस मैं लाना नहीं चाहता. I wanted to be a musician, but I never had the time. I wanted to act in film, but I never had the time. I wanted to do this, but I never had the time. It's actually BS. If you put in the focus, it will happen. So first thing is bring your focus onto what you want to do in a more fruitful way.
टाइम तो आज भी दे रहे हैं ना, क्यों आए मार्केट में? रुपया कमाना था ना, तो कहीं से तो टाइम तोड़ के निकाल रहे हैं ना आप अपने नॉर्मल शेड्यूल से। बन रहा है, कभी बनता है कभी नहीं, थोड़ा बन रहा है, नॉट टू द रिक्वायर्ड लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, तो व्हाई आर यू वेस्टिंग टाइम? डोंट, आइदर गेट योर ऑब्जेक्टिव और लीव इट। दैट इज द थिंग। वर्ल्ड कप टेस्ट क्रिकेट चल रहा है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर विनिंग? मेक लॉट्स ऑफ रन्स, जो ऑस्ट्रेलिया ने बना दिया। उसके लिए क्या चाहिए? बैट्समैन हैव टू परफॉर्म, देन रेस्ट्रिक्ट द अदर टीम, सो बॉलर्स हैव टू परफॉर्म। जो ऑस्ट्रेलिया के बॉलर ने परफॉर्म कर दिए, उनके बैट्समैन ने पेल दिए अपने को। फील्डर्स हैव टू बी शार्प, कि अननेसेसरी रन नहीं देवे, convert 3s to 2s and 2s to 1s and cut off boundaries and all that. Which means what? The whole thing is a teamwork. आपके पास कौन से 11 आदमी हैं? आप तो अकेले बैट्समैन हो, फील्डर हो और बॉलर भी हो और विकेट कीपर भी हो, तो सारा काम आपको ही करना है। Bring the focus that this time I need to be a batsman, now I need to be a bowler, now I need to be a fielder, now I need to be a wicket keeper. Everything. We are rolled many rolled into one. And that's how it can happen. You must understand that it is you who stands in your own way from getting success towards you. Only you. योगी बेरा एक कार्टून कैरेक्टर है, बच्चे लोग का बुक्स में आता था, उसमें लिखा है कि योगी बेरा comes and says, I have met the enemy and he is within me. ये कार्टून में था, ये बच्चे लोग को समझने का कैपेसिटी नहीं है, लेकिन उधर भी लिख दिया था। So all of you have to do the work. You're in the right place. You got the right tools. You have the right support systems. See, everybody is in business. We are also in business. No one is kidding yourself that I'm here to help you only. No, I'm here to do business. You're also here to do business. So let us not get into that aspect at all. Everybody is doing business. Everybody is marketing. You're marketing to your boss. You're marketing yourself to your wife. When you went for matchmaking, तभी क्या किया आपने? खुद को मार्केट किया ना? करते ही हैं। Parents are marketing to one another. Dada is marketing to the other dada. हमारा गांव ऐसा है, तुम्हारा गांव ऐसा है। पूरा मार्केटिंग ही है। तो सब लोग सब कुछ मार्केटिंग करेगा, सब बिजनेस करेगा, सब कुछ करेगा, बट उसके अंदर मुझे फायदा कहाँ हो? विच टूल्स आर गोइंग टू हेल्प मी? अगर चार्ट्स आर गोइंग टू हेल्प मी, चार्ट्स। अब चार्ट्स के लिए बेटर मोर एफिशिएंट वे है, जो नियो ट्रेडर टाइप है, उसको यूज कर, चार्ट भी यूज कर। बैलेंस शीट देखना है वो भी देखो, फंडामेंटली कोई चीज को वेट करना है वो भी करो। समय कितना है उसके अनुसार, दैट इज द की। So look into your time. That is where all the problems. Look into yourself. And if you start from there, slowly things will unravel. Right? Thank you once again.